Namaste, all the respect people. And first of all, I would like to thank you, Kun Anita, and for all of you to have me presenting about Ramayana here. May the grace of Lord Ram protect us all, and may his name be mentioned forever. Right. Before I go into my presentation, I would like to show a chart that I've drawn. I don't know if you can see. You can see. Hang on. No, we could not see. Is it on now? No. Yeah. It's come. Yeah. Okay. Right. This is. I'm not going to go into detail about Buddhism and connection with Lord Ram, because I think in Kun Anita's book she has explained already how the story of Rama has assimilated into Buddhism, or vice versa, how Buddhism absorbed the story of Ramayana into the teaching here. But I would like to show you this diagram which I've drawn out. This is the what I believe, and I have to say also this is not 100% academically correct, but this is what I understand how Ramayana had come into Suvarnabhumi or Indochina region, right? If you take a notice at the all the red line and all the writing in the red box, this is how I believe that Ramayana had started to come into this region with Hinduism and gradually work its way until, if you see the bottom line, this is how this is Thailand today, right? And I would like to also explain to all of you at this stage also that Ramayana and story of Lord Rama has changed their significance quite in quite some extent since the past and comparing to the present. I don't know, Kun Anita, would you like to translate that? Yeah, I can translate that. It is actually Kunakrin जो बोलना चाह रहे हैं, तो उनका जो ये डायग्राम उन्होंने दिया है, it's not very clear, but what can I understand, ये जो बोलना चाह रहे हैं, जो ये कलिंग से कैसे जुड़ा हुआ था, हम लोगों का ये जो थाई का जो संस्कृति है, थाई में जो हिंदुओं का प्रभाव है और उसका जो रामायण का साथ रिश्ता है, उसमें से ये डायग्राम में उन्होंने दिखाने का कोशिश किए हैं, जो कलिंग से शुरू करके कैसे ये उनका परसेप्शन है जी, ये चीज आ रहे हैं कलिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो अशोक का बाद में महान सम्राट अशोक का, उन्होंने उनका बेटा बेटी को भेजे थे बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे देश में, तो उसमें से मैं जितना जानती हूँ Kunakarin, is it I think it is related, or also the king Ashoka sent two monks to share the thought of Buddhism in Thailand. Yes. And that is the first monastery. वो पहले monastery था जिसका नाम था Nakhon Pratham. अभी भी है वो. Nakhon Pratham means Nagara Pratham. Nakhon is वो शब्द आए हैं नागौर से, और Pratham is the Pratham, the first temple of Nagar Pratham, first city of the Thailand, जिसमें अशोक ने दो साधु को भेजे थे बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए, लेकिन ऐसे उनका जो दावा है, उन्होंने जो बोलना चाह रहे हैं, उसमें से हिंदू धर्मों का भी तो बात आते ही है, तो ऐसे ही उनका बिलीफ है कि रामायण भी उस तरह से आए हैं. तो now continue Kunakarin. Okay. Hang on. What have I done with this? Can you still see my diagram? Yeah, I can see now. Okay, hang on. It's gone from my. Okay, I think you just speak. I will translate them. Okay. Okay, all right. So there's no question that the Indians were the first settler into this region, but prior to that, there had been prehistoric people or aboriginal people in this region already, and the Indian civilization, and I believe the story of Lord Rama came through
the people came with the people of Kalinga people in Odisha. They came to this region, and after that they mingled with the local or the original people, and they became the Mon. At this stage, I have to say this is before the Buddhism emerged into this world, because in some of the legend of regarding the Buddhism travel into this region, it has already been mentioned about a city known as Ayodhya, and also Lavapula, which is again the name of Lord Rama's son. So there had been some Indian people here long before, and also those people obviously must have worshipped Lord Rama. So that's why I draw it's like a spotlight that these in this pre-Buddhist era, there had already been Kalinga people who became the Mon. And on the other hand, on the right with the blue line, you can see this is the story of the Brahmin, Godinya, who also came to this region and originated the origin of the Khmer people. So the Mon and Khmer, they were like brothers, and start from that, they gradually build up their empire. Right. So after that, let's follow the red line, because the other line it might take too long. The Mon people call themselves the Raman, and according to some of my my friend, the Mon scholar, they explained to me the Raman mean children of Lord Ram, or children of Rama. So it must Rama must have been very significant to the Mon people initially, before they later on became a Buddhist and very strict Buddhists later. But they still inherit the name of Raman until this day. The Mon people then built up 2 kingdoms in this region. Another thing that I have to say, I have to tell all of you to take notice is, I put a small initial after every box, and in there the H represents Hinduism, and the B represent Buddhism, and the A represent animism. So this is how I understand. It may not be as correct or as clear but this is how I try to make it a bit obvious and black and white to show you all. So the Mon people then built up a Mon kingdom. There were 2 Mon kingdoms in this region. And this is, after this line, you can see the Buddhism start to arrive in this region already. So the Mon in today Myanmar or Burma, they built up a kingdom known as Sutamavati kingdom, or Saterm, the kingdom of Saterm. And the Mon in today Thailand, they built up the Dvaravati kingdom. So you can see now so I think the Sutamavati kingdom, they were of Buddhist more than the Hindu, whereas the Dvaravati kingdom, they still remain Hinduism and worship mostly with Lord Vishnu or Lord Rama and Lord Krishna. You can see now some of people, they believe that Dvaravati people or Mon people can also be called or mentioned as the Upper Khmer, because the Khmer language and Mon language, they share the same language family. Whereas in today Cambodian, Angkor Wat and so on, they call themselves the lower Khmer people. And in this case, the Dvaravati or the Upper Khmer people then split into 2 kingdoms, the Western Dvaravati kingdom and the Eastern Dvaravati kingdom. Was it too long? I think I just want to translate it, because it's very interesting. खुनाकारिन ने जो बात बोले हैं वो है जो before Buddhism, actually the prehistoric people, the prehistoric people and ancient people जो था, वो कलिंग से जो लोग गए हैं, उसके पहले भी मैं जानती हूँ, मैं मेरे किताब में भी उसका उल्लेख किया हूँ, वो ब्राह्मणिज्म का भी पहले था एनिमिज्म पूरा साउथ ईस्ट एशिया में,
जिसको हम लोग जैसे पेड़ को पूजा करते हैं, जैसे पत्थर को पूजा करते हैं और किसी सिंबल को पूजा करते हैं, वो लोग भी ऐसे करते थे। फिर ब्राह्मणिज्म जो गए हैं और बुद्धिज्म जाने का पहले ही ये जो मॉन पीपल जो बोल रहे हैं, ये कलिंग से वो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छा से मिलेगा डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन का किताब में, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार का किताब में, जो उन लोगों ने बताए थे जो कलिंग में जब ये युद्ध हुआ था और बुद्धिस्ट रिलीजन का ऊपर उसका जो असर पड़ रहे थे, मतलब लोगों का असर पड़ रहे थे, उस टाइम में इंडिया से बहुत भारी रकम का एक माइग्रेशन हुआ था और वो माइग्रेशन पूरा साउथ ईस्ट एशिया का तरफ चले गए थे और उसमें से मेन था कम्बोज, जो कैम्बोडिया आज है, वो प्राचीन कम्बोज और थाईलैंड का प्राचीन सियाम देश, ये दोनों देश में ये माइग्रेशन शिफ्ट हो गए थे और वो माइग्रेशन का नाम है मन। अभी जो बोलते हैं मन बोलते हैं उनको। और मैं और भी काम कर रही हूँ त्रिपुरा का साथ भी, ये आसाम में भी एक थाई किंग रहते थे, तो उसका साथ ये जो बर्मन टाइटल जो है हम लोगों का आसाम का भी, उसका भी गहरा रिश्ता है। वो धीरे धीरे अगर प्रभु चाहेंगे तो निकाल के आएंगे। तो पुन आकारिन ने बहुत अच्छा से दिखाया जो वो मन पीपल ने उनका जो किंगडम था वो दारावती किंगडम बोलते हैं, दारावती बोलते हैं, और वो थाईलैंड में था दारावती और म्यांमार में था वो धम्मावती। तो दारावती जो राज्य था उसमें ज्यादा हिंदुओं का प्रभाव था, रेदर देन धम्मावती में बौद्धों का प्रभाव ज्यादा था। तो मैं भी दारावती का बारे में काफी, जब हम लोग गाइड के लिए काम करते थे, बहुत पढ़ाई भी किए हैं। हम लोगों का म्यूजियम में बहुत कुछ एविडेंस है जो दारावती में बहुत कुछ था। तो उन्होंने बोल रहे थे कि और दो सिटी है, मन लोगों ने दो सिटी बनाए थे उस टाइम में। एक है हरिपुंचाई है और दारावती है। हरिपुंचाई इज द हरि का नाम से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी काफी हिंदुओं का प्रभाव है, रामायण का प्रभाव है। तो मैं पुन आकारिन को रिक्वेस्ट करती हूँ इसको थोड़ा और बोलने के लिए, क्योंकि इसमें जो उन्होंने बोला है खमेर, हम लोग क्या है जो हम लोगों का ऐसे इन जनरल पीपल है, हम लोगों का पास खमेर भाषा का कोई जानकारी नहीं है। बट खमेर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डायनेस्टी इन कंबोडिया, और उनका जो था, जो हिंदू धर्म का मेन प्रवक्ता था, वो लोग बहुत अच्छा काम करके रखे थे। तो उनका गहरा प्रभाव था थाईलैंड का ऊपर, और इसलिए रामायण से लेके महाभारत से लेके सब कुछ है। मैं मेरी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी, जो तब आप लोग देख पाएंगे जो उसका असर कैसे गहरा है इसका ऊपर। और उसमें और भी एक इंटरेस्टिंग बात बोला है पुन आकारिन ने, उन्होंने बोला है कि अभी भी मॉन पीपल जो है, उन्होंने बोलते हैं दे आर बिलोंग फ्रॉम द रामन, वो रामन रेस का है, रामन जाति का है। और वो रामन जाति का जो है वो बोलते हैं जो हम लोग रामा का ही, इसका जो हम लोग का जो ब्लड रिलेशन है वो राम का साथ जुड़े हुए हैं। तो थाईलैंड में लवपुरी भी है, लवपुरी और लव का देश, वो जो श्री रामचंद्र का बेटा का साथ जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक वो अभी तक इतना ही बोले हैं। और कैसे अपर खमेर, अपर और लोअर खमेर ये दो चीज होता है। अपर खमेर में ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन इन्फ्लुएंस का, और लोअर में थोड़ा बुद्धिस्ट का ज्यादा है। सो आई विल रिक्वेस्ट पुन आकारिन प्लीज कंटिन्यू एंड कंक्लूड योर lecture. Okay, all right. Thank you very much. Right, so let's follow the mon of Eastern Dvaravati Kingdom, and Kun Anita mentioned about Haripunchaya as well, because the three major important cities of Eastern Dvaravati Kingdom, they were the Sri Dev, which I translated as Sri Ram Dev Nakhon, or the city of Sri Ram. And I think this is my personal belief, this was the original Ayodhya kingdom before it's moved to present day Ayutthaya. And Lavo, as I mentioned, and Haripunchaya was a break off of the city from Lavo or Lavak city, and now situated in the north of Thailand. Well, at this era, Eastern Dvaravati Kingdom and the Khmer Empire merged into one. Therefore, this may answer the conflict between the Chinese
and the Vaishnavites in Khmer Kingdom throughout many reigns, because the upper Mon, they worship Rama and Vishnu, whereas maybe the Khmer people, they worship Shiva. So when the dynasty changed, sometimes they changed the sect, and one became more powerful than the other. Well, after that, after the two kingdoms merged, then I call in this my diagram as United Khmer Kingdom, which is like the merge between the Mon and Khmer into one. And now, when at the same time they built the new Ayodhya, they moved from Sridev, which is in the north, to more southern part of central Thailand, and later on this new Ayodhya will then became Ayutthaya in sometime in 14th century. Like, so if we follow Ayutthaya, then on the left of Ayutthaya, you can see the Thai people start to arrive into this region, and whereas they sack Haripunchai, the Mon kingdom in the north, and merged them into Lana kingdom, and the Thai in Sukhothai then became more powerful. Sometime in 15th century, the a Thai princess married to a Ayutthayan king. It was then the Mon and the Thai merged and developed into mid Ayutthaya and late Ayutthaya period. At this time, Buddhism had also become very powerful and overwhelmed all the previous Hindu belief, but they still keep some of the Hindu Brahmin in the royal court. Then, as you know, later on when Ayutthaya was sacked and Latana-Kosin or Bangkok period emerged, we inherit something from Ayutthaya. Ramayana at this stage then had lost its significance as belief, as a symbol, or as a spiritual status to the Thai people, because there was emerge of the Ramakien performance, and Ramakien performance is used mainly as entertainment. As King Rama I cited at the end of his Ramakien play script, that the Ramakien story or the story of Rama, there's nothing to be hold on to. It's just for entertainment. It's just for celebration. So people should not hold on to the story, and anything happiness or sadness happened in this story, you should let it go. So I think this is quite a very Buddhist belief that put into the Ramayana story at the end. So this reflects how Ramakien or how Ramayana today had become. It's more like entertainment than anything related to philosophy, which I think, well, there must be something that we can do to revive the old value of Rama and Ramakien or Ramayana in Thailand. So I shall end my presentation here. Right. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Kunakaran. I think Rajeshji also thanks to you. But before that, I just want to translate your last part. Okay. Yeah. So last में जो बोला है Kunakaran ने, that is also very important. उन्होंने बोला 3 सिटी है, वो मन लोगों का द्वारा 3 सिटी बनाए गए थे, उसमें हरिपुंचई मैं पहले ही बोली थी, और एक है श्रीथेप, and that श्रीथेप actually coming from Sridev, and it is believed that it is a सूर्य देवता का शहर भी था, और रामचंद्र जी भी सूर्य वंश का ही है, तो उनका बिलीव में that श्रीथेप is the city of the Sri Rama, और यही था पहले का अयोध्या. अभी मैं दिखाऊंगी जो नया अयोध्या है जो 1400 शतक से है, वो अयोध्या बाद में हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू कुनाकरन वो श्रीथेप भी था अयोध्या पहले का. तो अयोध्या इज कमिंग फ्रॉम हम लोगों का जो अयोध्या है उसी से आएगी. और फिर उसके बाद में जो अपर मन जो बोल रहे थे वो लोग विष्णु का पुजारी था, और लोअर मन का जो था वो था शिवा का. इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है, उसके बारे में मेरा अलग से रिसर्च है. ये है हरिहरा.
पूरा साउथ ईस्ट एशिया में आप लोग देखेंगे हरिहरा का बहुत मील है, ये विष्णु एंड शिवा का कॉम्बिनेशन का है। हम लोगों का म्यूजियम में साउथ ईस्ट एशिया का बेहतरीन मूर्तियां जो है, विग्रह जो है, वो है हरिहरा का मूर्तियां। मैं बाद में कभी मौका मिलेगा राजेश जी से, तो तब मैं हरिहरा का साथ रामायण का कैसे रिश्ता है वो बाद में बताऊंगी। और मैं क्विकली जा रही हूँ, उन्होंने लास्ट में जो बोला है, जो ये सुकोथाई बोल के एक राज्य था, वो स्वीकृत का बाद, दारावती पीरियड का बाद सुखोथाई, सुखोथाई का मीनिंग था उदय ऑफ सुख, सुख की उदय, इसी से सुखोथाई आए थे। सो सुखोथाई ये सुखोथाई पीरियड हम लोगों का गोल्डन पीरियड, जैसे गुप्ता पीरियड मानते हैं हम लोगों का इंडिया का गोल्डन पीरियड था, सुखोथाई था थाईलैंड का गोल्डन पीरियड। तो एवरीथिंग जो भी हुआ है सुखोथाई पीरियड में बहुत सुंदर से हुआ था। उस टाइम में थोड़ा युद्ध कम हुआ था, बट बाद में गर्मी लोगों का साथ युद्ध हुआ तो अयोध्या से लोग भाग थे। अभी का जो नया है बैंकॉक का जो नाम है, एक्चुअली वो नाम है रत्ना कोसिन, रत्न संभवा एक द्वीप जिसमें रत्ना कोसिन है, वो नाम है बैंकॉक का। तो उसमें रामायण जो है, अकॉर्डिंग टू पुनाकारिन, उन्होंने अभी बोल रहे हैं जो अभी भी तो रामायण है, बहुत कुछ है बैंकॉक में, लेकिन वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन मेरे लिए, मैं एक भारतीय होके रह के जो समझ में मुझे आए हैं, अभी उतना श्रद्धा जो उन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है वो हम लोग में होता तो उसमें भी काफी फर्क आ जाता है। लेकिन ये बात सही है, जो पहले और भी स्पिरिचुअली पावर था रामायण का, और मैं मेरे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाऊंगी जो कैसे हिंदू कल्चर को भी उसके साथ लेके गए। धन्यवाद, नमस्कार।